तो चैनल आज हम फिर से अपने न्यू वीडियो के साथ आए हैं. वी आर इन टू द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स इन टैक्स प्रोसीडिंग्स. ड्राफ्टिंग स्किल्स अपने आप में ही एक इतना वास्ट टॉपिक है कि उसे 1, 2 या 4 वीडियोस में पूरा का पूरा कंपाइल करना इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आएंगे इसको लेके, क्योंकि आप जानते ही होंगे ड्राफ्टिंग स्किल्स में अपनी मास्टरी लेने के लिए काफ़ी समय हमको देना होता है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें पूरे एक्सपीरियंस के साथ भी हमें काफ़ी साल लग जाते हैं अपने आप को इस चीज़ में मास्टर बनाने के लिए. तो हम इसी श्रृंखला में अपने वीडियो नंबर 3 पर हैं, जिसमें हम ड्राफ्टिंग स्किल्स इन द न्यू रेजिम ऑफ फेसलेस असेसमेंट में हैं. तो इसमें मैं आपको वही बताऊंगी कि हमें कैसे अपना ड्राफ्टिंग स्किल्स को एनहांस करना है और कैसी हमारी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, सो दैट हम जो रिप्लाईज सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट में वो हम ईजीली कर पाएँ. सो हियर नो व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट इन फेसलेस असेसमेंट रेजीम. ज़्यादा इंट्रोडक्शन ना करते हुए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. So before getting into these techniques, it is important to have a quick overview of the faceless assessment provisions in the Act. Provisions जानना बहुत ज़रूरी है. Unless you are not sure with the provisions, we won't be able to have a upper hand. So Section 144B has laid the foundation of the faceless assessment, while in the subsequent chapters, a detailed scope and provisions of this section will be discussed. Definitely, हम जो भी next अपने वीडियोस बनाने वाले हैं उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे. एंड सफाइस टू नो एट दिस स्टेज द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट वन मे गेट टू मेक सबमिशंस बिफोर एनएफएससी इज़ अ टिपिकल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स. नॉर्मली 2 से 3 या मैक्सिमम 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं. तो ये कैसे मिलती है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. यू हैव टू स्टे विथ मी. हमें बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन यू कैन हैव अ बेटर सबमिशन एंड अ बेटर प्लानिंग एंड एक राइट अप्रोच टू take your case forward with the authorities. This is required so that we know when and to what extent do we have to make our submissions in the faceless regime correct. So here we have a concise expression. NFSC will issue National Faceless Assessment Center is going to issue a notice under section 143(2). 144B11 को आपको रीड करना है. एंड विद इन 15 डेज, नॉर्मली 15 दिन का टाइम दिया जाता है. कोई भी नोटिस आएगा विद इन 15 डेज यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, एंड विद इन 15 डेज देयर फ्रॉम द एसएससी इज एक्सपेक्टेड टू फाइल हिज रिस्पॉन्स. ये होती है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. सो व्हेन यू गेट दिस फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू टेक इट. बहुत बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि ये नोटिस क्या है, हमारा नहीं है, दिस दैट, व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट रिप्लाई. सो इफ़ यू डोंट रिप्लाई देन you've missed with the first opportunity. So you have to make sure that you do not miss any of the opportunities. At this stage, detailed inquiry has not yet started. 143(2) में they normally say, अगर आप वो notice देखेंगे 143(2), it will typically say that I would like to give you an opportunity to produce any evidence, information which you feel is necessary in support of the said return of income on or before so and so date they're going to specify कि आपको इस तारीख से पहले, विच इज़ द 15th डे, 15 दिन का टाइम दिया जाता है. सो अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हाट रिस्पॉन्स शुड बी फाइल्ड एट दिस स्टेज. इट मे बी एडवाइजेबल टू फाइल अ कॉपी ऑफ द कंप्यूटेशन. नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, उसमें ऐसा ही आता है. तो हम मोटा मोटा अपना डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं. वी डोंट गिव द स्पेसिफिक डिटेल्स बिकॉज इट डजंट आस्क फॉर द स्पेसिफिक डिटेल. 143(2) का नोटिस अगर आप पढ़ेंगे, आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वी गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट ओनली. तो ये नोटिस के साथ हमारा बहुत लंबा रिश्ता होने वाला है, बिकॉज फाइनली वी आर गोइंग टू डील विद ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी point of the notice. So 143(2) is not that detailed. It is just a very summary type of notice which comes in. तो उसमें हम नॉर्मली अपना ITR देते हैं, कंप्यूटेशन देते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देते हैं, so that we can just tell them that we have done whatever was needed. So audited accounts, director's report, additional claim that you've claimed, उसका कोई अगर सर्टिफिकेट है, CA सर्टिफिकेट है, और सम रिपोर्ट यू हैव ऑफ सम कॉस्ट अकाउंटेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आप वो देते हो. No doubt you may get another chance. Definitely this is the first opportunity which you've got. So उसके बाद आता है, the moment you submit this, then you get 142(1) का notice, which is definitely a detailed one.
142(1) is issued to supply these documents, but if furnished at this stage, one reduces the possibilities of any allegation. 143(2) में हम ये मोटा मोटा बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट इसलिए पहुंचा देते हैं डिपार्टमेंट के पास, बिकॉज 142(1) में ऐसा एलिगेशन नहीं है कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. वैसे तो 142 में दे गोइंग टू सेंड यू ईच एंड एवरी पॉइंटिंग आउट ईच एंड एवरी डिटेल विच यू हैव टू गिव इन डिटेल. So you have to wait for it. That would be the second opportunity. But if furnished at this stage, one reduces the possibility of any allegation of understatement of income and enhance the efficacy of defense. That explanation is bona fide. We always have a bona fide explanation. Only the thing is, for the purpose of section 270A penalty sections at this stage, at a later stage, जब पेनल्टी का नोटिस आता है डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट असेसमेंट ऑफ फर्स्ट लेवल के असेसिंग ऑफिसर से वी हैव एन एक्सपीरियंस. इट इज़ अ वेरी सॉरी एक्सपीरियंस, दो द फैक्ट्स आर क्लियर, दो एवरीथिंग इज क्लियर, बट स्टिल द ऑफिसर ही वॉन्ट्स टू मेक एन एडिशन, ही डजंट वांट टू अंडरस्टैंड. तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, एवरी डिटेल यू हैव टू गिव. Don't miss out anyone, so that at a later stage when he's done with the assessment and he's on with the penalty proceedings, then we can definitely come back and say, okay, we've given all these documents at this particular stage. Okay, this fight is always there with the department and the SSC, but we will always try to have an upper hand. NFAC calls for information as may be required by the assessment unit from time to time, and the assessee is expected to file his response within the time allowed. That means which is normally the 15 days का टाइम. ओके, सेकेंड सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये, जब वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मांगती है. एट दिस स्टेज यू मे प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स और मे प्रोवाइड डिटेल्स ऑन सैम्पल बेसिस इफ द डेटा सेट इज़ टू लार्ज. इफ ओनली सैम्पल्स आर प्रोवाइडेड, प्लीज सो. हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास सिर्फ सैम्पल्स हैं तो आप लिख के भेजिए. बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आप सैम्पल्स दे रहे हो, then you have to tell them that these are samples because it is a huge data and time consuming to provide everything. Scan करके upload करना, it's really time consuming and it's an effort which will not give you returns. So अगर उन्हें लगता है that they want it in complete, then they can आपको mention करना होगा कि अगर आपको चाहिए कि you want this data in 100%, then you have to tell us specifically, we'll give you. But nahi to, we are giving you on a sample basis that yes, we comply with everything. So you have to be very clear with this, and you have to make this clear to the department also. At the same time, assure that you will provide documents for any specific entry or transaction for further test check if the NFAC so requires. At this stage, you may also invite the designated officer to your factory. Of course, आप लिखिए ना, you come to the factory and you can visit everything, you get everything in depth of whatever you want to look into to view the data on your SAP. अगर आप SAP करते हैं, SAP आपके पास है, या अगर आपके पास Tally है, या कोई ERP पैकेज है, then आप वो सब आप mention कीजिए that we have our data on this package, so you can come down and our assistant will help you in digging out whatever you want to. We send an open invitation. ये क्यों है, ये मैं इसे क्यों कह रही हूँ, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हम आगे के वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे. एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आउट इन डिटेल कि ऐसा क्यों, बिकॉज इतने सारे सेक्शंस हैं जहाँ ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो शुरू के वीडियोस हैं, ये इतने ध्यान से सुनने के लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द क्रक्स ऑफ योर फर्दर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स. जब आप फर्स्ट लेवल पे रहोगे, फर्स्ट अपीलेट प्रोसीडिंग्स एंड सेकेंड अपीलेट प्रोसीडिंग्स, तब ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं. एंड वहाँ पे जाके आप पीछे आके दोबारा वो काम नहीं कर सकते जो आपको अभी करना चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गो स्लो. मैं वीडियोस छोटे बना रही हूँ सो दैट मैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ. वीडियोस के नंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट इन टाइम so that we are able to give full justice to what I'm saying and what I'm trying to make a point and what I'm trying to explain. Such positive statements can go a long way in providing an effective defense against any wild addition on the alleged ground that the required details are not furnished. Perfect. This is what we want, and we're going to discuss this in detail in the further videos also. So the assessment unit passes a draft assessment order. वो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली थी. नॉर्मली यू गेट दी थर्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, विच इज़ फॉरवर्डेड टू NFAC, एंड देन देर आर वेरिएशंस prejudicial to the interest of the SSC. NFAC हैज़ टू सर्व. अगर कोई भी एडिशन हो रहा है, NFAC को फिर से एक शो कॉज नोटिस भेजना होगा. शो कॉज नोटिस इज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
Never let them go unanswered. You have to be very sure, very cautious, very precautious, so that आप SCN को कभी भी ignore ना करें. You have to be very specific, point to point discussion, point to point detail submission, everything. As to why the proposed variation should not be made. Okay. The SSE is expected to furnish its response within the time specified in the SCN. This is the third opportunity, but first show cause notice. सबसे पहले आपको आता है, रिकैप कर लेते हैं, 143(2) का नोटिस, देन यू हैव द 142(1) का नोटिस विच आस्क फॉर द डिटेल्ड वन, एंड देन वो सबमिशन होने के बाद वो हो सकता है वापस एक और नोटिस भेजें अगर उनको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो. फिर उसके बाद आपके पास आती है थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज़ नॉर्मली दी show cause notice. This is the third opportunity, but the first show cause notice. It is at this stage that the SSE can ask for a personal hearing. Personal hearing मांगना बहुत ज़रूरी है. नहीं भी आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि even if your facts are so clear कि आपने उसको बहुत अच्छे से present किया है, but definitely you need to ask for a personal hearing for making oral submissions. हालांकि in today's time, what on the basis of my experience, I feel it's just a mere formality because they hardly care to listen to it. But then since it is a recorded format, you can always rely. आप अपने notings बना के रखिए कि आपने क्या क्या oral submissions दिए हुए हैं, because they have a recording it on their server या कहीं भी. Definitely ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो hearing करे virtual mode में and they don't have a copy of it. They will have it. आप उसका एक लॉग बनाइए अपने पास कि व्हाट हैव यू सबमिटेड, एंड इफ दोज आर नॉट कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द फाइनल ऑर्डर, देन डेफिनेटली वी हैव अ ग्राउंड, अ वेरी वैलिड ग्राउंड ऑफ अपील in the next appellate authority. Okay. So now if he does not ask, I mean the section is like, अगर आपने अपॉर्चुनिटी मांगी है पर्सनल हियरिंग की या वर्चुअल मोड पे हियरिंग की, only then they will give you. If you have not asked for it, they will not give you. So we have to make it a point कि आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मांगनी है. फिर उसके बाद AU prepares, जब आपका वो सबमिशन हो जाता है थर्ड अपॉर्चुनिटी में, when you have the show cause notice, then they will send a revised draft assessment order. एंड अगर उसमें और भी ज़्यादा वेरिएशंस कुछ हैं, दे आर आस्किंग फॉर इट, देन सेकेंड SCN आता है, विच इज़ द फोर्थ अपॉर्चुनिटी टू द SSE. With the above broad background of the statutory provisions, let us now move to the structure of the submissions that should ideally be adopted, and this we're going to cover in the next video. So we are done with the basis of the preparation of the background of what we are supposed to do, how our format should be, what should be the concise writing, and how would be the well organized structure. ये सब करने के बाद अब हम चलेंगे अपने next video पे, जहाँ पे I'm going to give you the